pin, Sarika. If your mobile is not horizontal, so your visibility will not be okay. So mobile should be horizontal. Sarika's mobile is not horizontal, I think. No, sir, my mobile is horizontal. तो एक काम करो, फिर वो ऊपर से वो ऐसा खींचो और उसको एक बार ऑफ करके ऑन करो। वो जो रोटेट लॉक कहलाता है ना, कई बार हमारे मोबाइल के साथ भी होता है। Now, बट इट इज ओके, ओके यू आर विजिबल। तो एक सेंटेंस लिखो। मैं खुद से आपके पास आया हूँ। मैं खुद से आपके पास आया हूँ। आया हूँ। हाँ, मैं खुद से आपके पास आया हूँ। And ladies, you should not worry about your writing. It will do whatever. See, this sometimes I'm just Is it talking. visible, na? It is visible, it is absolutely correct. दोस्तों, sometimes one of our mentality, our thinking to perform 100% bothers us. So just little bit come out of this thinking and mentality. अब सारिका तुम आगे का परफॉर्म करो, एक एक करके इनसे पूछो which chapter is this sentence related. Aparna Di, can you tell me which chapter does this sentence belong? Sarika, this sentence belongs to present perfect tense. सारिका पूछो who has to make this sentence. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Okay, please go ahead. Firstly, I will take the subject. Like this sentence belongs to, as I said, present perfect. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is have. Then I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is come. Then I will take the preposition and the preposition to. Lastly, and the, next I will later on I will take the object, and the object is you. Lastly, I will take the extension, and the extension is myself. A myself possessive adjective. This is absolutely correct. This is absolutely good. Uh, this practical has been successful.
Sarika is clearly visible, board is clearly visible. Now you guys can pin me, unpin Sarika, and the sentence is here. Voluntary come to you. अच्छा, just like voluntary retirement. खुद रिटायरमेंट लेना यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट पापा ने लिए थे ना. So how many volunteers do you have? अच्छा, वॉलेंटियर से बना वॉलेंटरी. वॉलेंटरी वायलेंटरी स्वयं सेवक. स्वयं सेवक. I am the volunteer. आई एम ऑल्सो वॉलेंटियर. रितु से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग. रितु, who voluntarily came to you? Please come again. Who voluntarily came to you? I think your CC was not on. Now it is on. Who voluntarily came to you? My brother is volunteer. तुमने इज लगा दिया रितु. ये दिस इज पास. My brother voluntarily came to me. सर एक बार हिंदी मुझे वॉलंटरीली को. तुम्हारे पास खुद चलकर कौन आया था? मेरे ब्रदर खुद चलकर आए थे. वॉलंटरीली. अपर्णा एक बार प्रोनाउंसिएशन करो, मुझसे नहीं बन रहा बोलते. वॉलेंटरी रिटायरमेंट. वॉलेंटियर बोलते ना. वॉलेंटियर स्वयं सेवक. वॉलंटियर बोल के बन रहा है, जो लिखा है बोर्ड पे. वॉलेंटियरियल नहीं, हम भी गलत. वॉलेंटियरली. अच्छा हाँ, वॉलेंटियरली. My brother voluntarily came to me. मेरे भाई खुद चलकर मेरे पास आए. Aparna, who has came to you voluntarily? I'm very happy. Huh? Come again. Who came to you voluntarily? I'm overwhelming to say that कि my भगवान, my प्रभु voluntary came to me. Complete the process. अपर्णा, कौन खुद चलकर तुम्हारे पास आया था? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भगवान खुद चलकर मेरे पास आए. आसु सारिका. who came to you voluntarily? डी मोदी जी voluntarily came to me. आपके पास चलकर खुद कौन आया? डी मोदी जी खुद चलकर मेरे पास आए. Sir, should I change my setup? Or no, actually
I have to writing work inside the matlab in bedroom, and now I am in living hall. So should I go there or? Oh, मैं इसे फटाफट कर दूंगा. I will do it. Sir, you are mute. सॉरी यार, थैंक यू. मैं इसे फटाफट कर दूंगा. Now who has to make this sentence? I have to make that sentence. Good. That sentence belongs to future simple tense. Very nice. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. And then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Then I will take the Jimu's favorite. I will. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is do. Then I will take the adjective or noun that no, I will do. No, that I will do. Then I will take the preposition. Preposition it. बेटा इट preposition नहीं. नहीं, sorry sir. I will do it. It's the object. It is object. Good. Lastly, I will take the word quickly. Yes. But Nice. quickly object नहीं. Quickly is adverb. Yes. ly लगा तो adverb. Very good. Nice. अपर्णा, तुम क्विकली की जगह क्या लगाओ? In no time. हाँ. सारिका, तुम क्या लगाओगी? in no time, sir. Quickly is also correct. In no time is also correct. Now I am gonna give you something new. Ritu is so happy. She has made Complete sentence today. Actually, you know, ladies, रितु का फ्यूचर अच्छा है. Means I need to say the future tense of Ritu is good. फ्यूचर टेंस में वो सब बना देती. प्रेजेंट इज गड़बड़. पास्ट तो बहुत ही गड़बड़ है. प्रेजेंट पास्ट में गड़बड़ करती है. Let bygones be bygones. Have I given you? यस सर. Yes, sir. भूली ताही बिसार गए. रात गई बात गई. पास्ट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए ना. Now, Sarika, how much time will you take to do it? Sir, I will do it in a jiffy. सारिका, कितना समय लोगी इसको करने में? सर, मैं तो इसे फटाफट कर दूंगी. Come again your English sentence, Sarika. I will do it in a jiffy. बिजी सुनाई दिया मुझे. उल्टा. Aparna di, how much time will you do it? Will you take to do it? अच्छा, how much time will you take to do it? I will do it in a jiffy, Sarika. दी, आप ये करने में कितना टाइम लेंगी? मैं फटाफट कर दूंगी. रितु, how much time
will beautician take, how much time will beautician take? She will do it in a jiffy. ब्यूटिशियन कितना टाइम लेगी? वो इसे फटाफट कर देगी. Sarika, how much time will you take to do it? I will do it in a jiffy. Sarika, तुम इसे Google is करने में taking कितना समय लगेगा? zippy. The next sentence is, अब तो मैं होश में आया हूँ. Who has to make this sentence? It's Sarika's go. Sir, I have to make this sentence. This sentence belongs to present perfect tense. आया हूँ. Firstly, I will take the subject and the subject is I. कि sir, should I use conjunction first? Na? हाँ. Yes. Now, so firstly I will take the conjunction and conjunction is now. Later on I will put exclamatory sign with the conjunction. Thereafter I will take the subject and the subject is I. Later on I will take the helping verb and the helping verb is have. Thereafter I will take the third form of the verb. And sir, verb, I don't know what is the verb for होश में आना. No. Aparna, how will you make the sentence without process? Just speak the sentence in your mind, whatever has come. Now I am awakened. Now I am awakened. अब ये भी अच्छा सेंटेंस है, ये भी वही सेंस रखता है. ऋतु? Now I am in my sense. Okay. चलो इसको देखते हैं. अब हम इसको बनाते हैं. This sentence belongs to be present. Firstly, I will take the conjunction and the conjunction is now. Later on, I will take the. हमारे बी प्रेजेंट बता देने के बाद सारिका तुम्हें आसान हो जाएगा. एक शब्द की मदद बस हम करेंगे, या अपर्णा या ऋतु जो. Now I'm in my sense. Sir, nerve भी होगा ना. Now I am in my nerve. अब हमें एक एडजेक्टिव तो रखना पड़ेगा बी प्रेजेंट बना बताया जैसे, तो है ना. Now I am back. Now I am back. I'm back. Back to my Sense. सेंसेस. Ritu, now who is back in one's senses? Now I am back to my senses. रितु, कौन अब होश में आया है? अब तो मैं होश में आई हूँ.
Aparna, who is back to his senses? Now I am back to my senses. अब कौन होश में आया है? अब तो मैं होश में आई हूँ. Sarika, who is back to his senses? The government of Maharashtra is back to one senses. It's senses. अच्छा. Its senses. हाँ. The government of Maharashtra is back to its senses. सर बैक क्या होगा इधर पर? बैक what is Adjective. that? Adjective, हाँ. बी चैप्टर में तीसरा शब्द याद करो. Adjective और noun. तो ये adjective. पोजीशन हो गई. तो पोजीशन हो गई, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, टेंस हो गया. Noun. सेंसेस हो गया नाउन. Come again. सेंसेस हो गया सर नाउन. Yes. नाउन. Sarika, you are asked to ask me. जी. Sir, who is back to one senses? Yes, I wanted to hear this possessive adjective. Both of them did not use. He is back to his senses. सर कौन होश में आ गया है? वो अब होश में आ गया है. अब हम जानबूझ के राउंड अपर्णा से हेतु की तरफ ले जा रहे हैं. हमने ही का यूज कर लिया, अब ही मत यूज करना. पूरा 2-3 राउंड खेल लेंगे जब पूरे हो जाएंगे. अपर्णा, हु इज बैक टू वंस सेंसेस? Now she is back to her senses. यस. अब कौन जाकर होश में आई है? अब वह जाकर होश में आई है. सारिका, रितु, who back to his senses? Now they back to come their senses. नहीं. अपर्णा, come again. Who back to one's senses? अरे मेन वर्ब अपर्णा, मेन वर्ब. Who is back to one's senses? Who is back to one's senses? Sorry. Now they are back to their senses. अब कौन होश में आया है? अब वे होश में आए हैं. Ritu di, ask me. Sarika, who is back to his senses? Who is back to one senses? See, we are back to our senses. अब कौन होश में आया है? Now we are back to our senses. दी, अब हम होश में आए हैं. Okay. ही का आर हो गया, ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया. एक आध और बचा है हमसे. अपर्णा से पूछिए. जी. अपर्णा दी, who is back to one senses? It is back to its senses. दी, कौन होश में आया है?
वह होश में अब आया है। ही तो हो गया था पढ़ना में। इट इट अच्छा, तुमने इट रखा। चलो ऋतु, कुछ और ध्यान में आ रहा है? नो सर। चलो अपन एवरीवन हमसे पूछो। who is back to his senses, हिज नहीं। who वंस। is back to one's senses. नाउ यू आर बैक टू योर सेंसेस। कौन होश में आया है? अब जाकर तुम होश में आई हो। केवल यू बचा था। ही, शी, वी, दे, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और यू, नाउ ड्रिंकर। अब तुम कुछ भी लगाओगे ऋतु तो या तो हर आएगा या हिज ही आएगा, दो में से हाँ कोई। बस बस, अब कुछ भी लगा। यस। अब एक ही बचा था यू। यू का किसी हाँ ने नहीं बोला था योर, यस। है ना। और आई का तो सामने दिख ही रहा है। आई का तो सामने है ही ऑलरेडी, तो आई का बोलने की अब जरूरत नहीं थी, वो एक राउंड हो चुका था। यू, ही, शी, वी, दे, ये प्रैक्टिकल है। इट बोल सकते हो किसी डॉगी के लिए, किसी जानवर डॉगी के लिए। देयर इज अनदर सेंटेंस, साला नशा करके टुन्न ना हो गया हो। साला नशा करके सो ना गया हो। पब्लिक साला नशा करके टुन्न। This sentence belongs to must chapter. वो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी अपन बनाते हैं ना। So this sentence belongs to be. I have to make this sentence. This sentence belongs to be present. नहीं, पिछला वाला देखते हुए यहाँ से शुरू होगा। I hope. Firstly, I will take the subject, and the subject is he. Later on, I will take the main verb. नहीं तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चलो एक सेकंड जरा पूछ लेते हैं कि बिना प्रोसेस के सारिका तुम उसको कैसे बनाओगी? सर टुन का तो आ ही नहीं रहा है, क्या होगा? अच्छा, और थोड़ा ऋतु से भी पूछ लेते हैं। ऋतु दिमाग में कैसा आ रहा है बताओ। सर साला में भी he has gone to sleep after taking drink. एक बहुत अच्छी बात हुई कि ऋतु ने टेंस जो है वो बिल्कुल सही पकड़ लिया। वो जो नशा होता है ना उसको हिट बोलते हैं। Hit. टेकन है। कभी पिक्चर सीरियल में ऐसा देखा होगा ना, इसको हिट बोलते हैं। तुम लोग को भी देखने मिलेगा ये सेंटेंस। तो आई होप ही हैजंट टेकन ए हिट
and nodded off. nodded off. Tough. समझ गए ना? नॉड नहीं तो Noted off means ये जो हम करके दिखा रहे हैं झूम झूमना. या बस में या ट्रेन में जो हम नॉर्मल भी करते हैं वो भी nodded off. So this sentence belongs to present perfect. चलो कर लेते हैं, एक एक करके सब बता दो। ये तो तुमने बता ही दिया था, सारी का इसको बताओ। This is sir, this is helping verb and helping verb with the negative word not. अब ये ऋतु बता देगी। Sir, sorry, I was not aware. चलो अपर्णा बता। The third form of the verb. सारी Sir, this Article. is article. First form of the verb. नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है ऋतु, यहाँ तो वो कौन बताएगा हिट किस तरह से काम कर रहा है। Object की तरह. Adjective. ऑब्जेक्ट है, लेकिन noun Adjective. है। हाँ, adjective. सारी का Conjunction. Sir, hit क्या है यहाँ? नाउन है, Adjective. यहाँ नाउन है, Noun है ना? ऑब्जेक्ट भी है और एक नाउन है। Sir, adverb नहीं हो सकता वो. Hit. एक्चुअली टेक अ हिट पूरी वर्ब है, टेक अ हिट, इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, इज टेकिंग अ हिट, वो नशा पत्ती कर रहा है, इज टेकिंग अ हिट। ये एक्चुअली टेक्निकल टर्म है, मतलब नशा करने वालों के लिए। अब वो LSD हो सकता है, कोकीन हो सकती, हेरोइन हो सकती, कुछ भी हो, ये सब इसको वे लोग इस नाम से पुकारते हैं। अपर्णा, वेयर इज ही? I hope he hasn't taken a hit and nodded off. कहाँ है वो? इतनी देर हो गई। मुझे लगता है उसने नशा किया है और टुन्न हो गया। सारा नशा करके सोना टुन्न ना हो गया. टुन्न ना हो गया। चलो रितु से पूछते हैं, तो वेयर इज ही? Sir, I hope he hasn't taken a hit and nodded off. कहाँ है वो? करके सो ना गया हो, हाँ, टुन्न ना हो गया हो. Sarika, where is he? जी, I hope he hasn't taken a hit and nodded off. वह कहाँ है सारिका? साला नशा करके सुनने ना हो गया हो। टल्ली. अपन लोग लेडीज पिएगी कोई तो टल्ली होएगी ना वो. मुंबईया लैंग्वेज, हाँ, टल्ली। हमारी my younger co-sister used to say about my bai. She is a drunkard. So in a festive mood, she used to do this. वाह, क्या Always बात. my co-sister say like this. She must be. She hasn't taken a hit and nodded off. जाके टुन्न हो गई होगी, पीके टुन्न हो गई होगी, टल्ली टल्ली. इसलिए आई नहीं आज काम पे। सारिका एक बार अपर्णा से और पूछ लो, वो ट्रांसलेशन करती। जी, दी हु इज शी? अरे, वेयर इज शी? I hope she hasn't taken a bit and nodded off. दी कहाँ है वह?
वो नशा करके टुन हो गई होगी, नशा करके टुन ना हो गई हो। तुम बार बार उसको ट्रांसलेट कर रही हो, उसका भाव तो वही है। साली नशा करके टन्न पड़ी होगी कहीं, वो बिना उसके एक्सप्रेशन के नहीं आता। ओके, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have Sir, to I make. have to make it. चलो ऋतु को बना। That sentence belongs to present continuous tense. This is Noted. affirmative sentence. Firstly, I will take the uh, now क्या था conjunction. Firstly, I will take the conjunction now, and then I will take the subject, and subject is you. नहीं, now के बाद I will exclamation sign. Then I will take the subject, and the subject is you. And then I will take the helping verb, and the helping verb is are. Then I will take the first form of the verb with ing, breaking. Then I will take the positive adjective, my. Then I will take the object, and the object is trust. Lastly, I will put the full stop. Now you वाह, are breaking my trust. बस Breaking क्रिया नहीं है, means बाकी सब। हाँ, you have written H knowingly. Breaching. ये अलग वर्ब है बेटा, ये विश्वास तोड़ने के लिए प्रयोग होती है। गूगल कर लेना और ग्रुप में सेंड कर देना। ब्रीचिंग, Preaching, Breaching. breaching. Now you are breaching my trust. Who is breaching your trust, Ritu? I think my maid is breaching my trust. तुम्हारा विश्वास कौन तोड़ रहे हैं? मेरा विश्वास मेरी मेड तोड़ रही है. Sarika, who is breaching your trust? The one of my very close friend is breaching my trust. सारिका, आपका विश्वास कौन तोड़ रहा है? जी, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा विश्वास तोड़ रही है. अपर्णा दी, Why is she breaching your trust? I don't know the she is very nice and she is very close to me, but I don't know what is coming in her mind, and nowadays she is avoiding me, and sometimes she is means मेकिंग एक्सक्यूजेस। she is making excuses to meet me. So, and I don't know why is she doing like This kind of thing, I don't know. breaching your trust. ललिता आंटी मस्ट हैव टॉक्ड टू हर। ललिता। Okay, ladies, I'm taking your leave. See you tomorrow. You can continue. Okay. Thank Thank you, you, sir. sir. Aao, Lalita. अच्छा. Lalita, I did not get. I did not get ki who is Lalita. Who is Lalita? Lalita aunty. I think your relative's name. नहीं, there is No. no relative name is Lalita. Lalita. Lalita aunty. Ask me now. It's your go to ask. I'm rest to ask. Answer. Okay. Aparna di, breaking your who is breaching your trust? I think some leaders of BJP is breaching Modi's trust.
Some leaders of BJP is are. Leaders of BJP are, yeah, leaders of BJP are breaching his trust. Yes. Okay, Modi ji's trust, no? Complete the process. Which kind of they breaking their trust? They are breaking his trust by um, doing Doing unwanted thing and non harm means just like think like he doesn't like Modi ji doesn't like they are doing, so they are breaking their breaching their trust, his trust, sorry, breaching her his trust. I think antisocial work, Huh. Which is like Modi They ji are strike, doesn't like. Which like they is are Modi ji strike misusing doesn't like. and they are Hmm. misusing their power. they are Yeah. misusing their power, doing strike and So so BJP is leaders not doing like this. on. Sometimes their behavior is not appropriable for the others and the parties values, and this kind of is activities Modi ji doesn't like. So I can say कि some BJP leaders are misusing their power and doing breaching Modi There. ji's trust. The actually na it is very natural कि if you have a power, so most of the people doesn't don't carry the this kind of power gracefully. So sometimes they behave like means unsocial elements, and they are doing all the things which they uh, they shouldn't do it, but Hmm. they are starting doing. You can use Because antisocial. हाँ hmm, they are understanding themselves कि we are in power and we can do anything. Nobody can unseat us because of Modi ji. Modi ji is there, so we can do anything. So this but kind of Modi thinking ji not can't should be tolerate this kind of unsocial activity. activities. हाँ So this kind of mindset should not be lead by this kind of BJP's leaders. They should pretend like the responsible leader like Modi hmm. ji. Hmm. So what to do? What to do, what to do, Not to do. not Chalo, to let's go. Bye. bye bye. Bye bye. Bye. See you. Nice to meet Bye.